जिन्होंने हमें हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने हमें जिंदगी दी। हम आज बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने हमें चलना सिखाया। हम बात कर रहे हैं आज उनकी जिन्होंने हमें बड़ा किया, पाला पोसा। उन्होंने जिन्होंने हमें हर कदम पे हमारा साथ दिया। हम आज बात कर रहे हैं उनकी जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं हो सकते। हम आज बात कर रहे हैं अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की। आज तक हमने उनसे सिर्फ लिया ही है, उनसे सिर्फ पाया ही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपने माता पिता को, जो हमारे लिए गुरु भी है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा का पर्व था, आज सावन के महीने की शुरुआत है। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि क्यों ना हम अपने माता पिता को वो प्यार, वो श्रद्धा, वो सुमन अर्पित करें। इस छोटी सी कोशिश में आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक बहुत ही खास प्रोग्राम में। एंड आई एम श्योर आप सबको ये बहुत ही पसंद आए। हमने सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम की शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करें कि हमारे अपने एक बहुत ही सीनियर लीडर हमारे हीली बिजनेस में हैं और उन्होंने अपने दिल से कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो जिसको कि उन्होंने अपने माता पिता को समर्पित किया है। और हम चाहते थे कि वो अपनी इन पंक्तियों को आपके साथ सुनाए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। तो इससे बेहतर तरीका इस प्रोग्राम को शुरुआत करने का और कुछ भी नहीं हो सकता था। सो आप सबकी तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बहुत ही सीनियर लीडर मिस्टर अवनीश जैन जी का। अवनीश जी, ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद सचिन जी। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल and it's a very auspicious day that we are celebrating our Parents Day। और जैसा कि सचिन जी ने बताया कि वाकई हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे माता पिता का, हमारे पेरेंट्स का जो हमारे ऊपर एहसान होता है, जो कर्ज होता है, उसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। और हम कुछ भी कर लें लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। सो मेरे मदर फादर अब इस दुनिया में नहीं है और उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि माँ सिर्फ मेरी या आपकी या किसी और की, सबकी माँ उतनी ही सम्मानीय होती, सबके पिता उतने ही सम्मानीय होते हैं और सबकी फीलिंग्स लगभग लगभग सेम रहती है। थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो जो मैंने अपने माता पिता के लिए लिखा है मैं वो आपसे शेयर करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी का कि उन्होंने इस चीज के लिए मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले मैं माँ के ऊपर कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। माँ है हकीकत, माँ ही ख्वाब है, माँ ही मन की मयूरा, माँ ही सुरखाब है, माँ ही खुशबू हर फूल की, माँ ही दवा हर शूल की, माँ सच्चाई का नाम है, माँ ही माफी हर भूल की। माँ से शुरू इबादत हो, माँ हो हर पूजा की थाली में, माँ मुकुट हो माथे का, माँ के नाम की हर ताली हो, माँ की तस्वीर सोने में जड़ी हो, माँ की मूरत घर में खड़ी हो, माँ के जिक्र बिना कोई बात ना हो, माँ के बिना कोई शुरुआत ना हो, माँ के नाम पर जायदाद नहीं कायनात ही कर दो अब सारी। और माँ ऐसा एक शब्द है जो है हर शब्द पर भारी, हर शब्द पर भारी। मैंने माँ के साथ अपने पिता के ऊपर भी एक कविता लिखी थी जब 3 साल पहले उनकी डेथ हुई थी और उसके 20 दिन बाद ही उनका बर्थडे आया था और वो 90वां जन्मदिन था उनका। तो उनके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने। और जिस तरह से उन्होंने पाला पोसा और जिस तरह से वो हर वक्त हमारे साथ खड़े होते थे, बचपन में जिस तरह वो कॉलेज प्रिंसिपल थे, वो एक शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन वो दशहरे के दिन यदि रावण दिखाने ले जाते थे तो कांधे पे बिठा के दिखाने में भी उन्हें कभी शर्म नहीं आती थी। और कुछ लोग पूछते भी थे कि आपने बच्चे को कंधे पे बिठा रखा है, तो बोलते थे मैं भले ही कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ पर बच्चा तो मेरा है। सो उसके लिए तो मैं एक पिता हूँ और मुझे अपना फर्ज निभाना है। सो उनके ऊपर मैंने लिखा था कि हर सफर में मजबूत पांव थे, जिंदगी की धूप में छांव थे, लिखना अक्षर सिखाया, हर शब्द को आईना दिखाया, गली के नुक्कड़ से हाथ पकड़कर बाहर निकाला, बनाना रोटी सिखाई, तोड़ने से पहले निवाला। वो पिता ही थे, वो पिता ही थे जो कांधे बिठाते थे, भौरे कंचे पतंग गुल्ली डंडा दिलाते थे। और माँ की मन्नतों के धागे तो दुआओं में काम आते थे, पर पिता का पसीना ताबीज से ज्यादा कमाल दिखाते थे। हमने कभी सपने पिता के पूरे किए या नहीं,
हमने कभी सपने पिता के पूरे किए या नहीं, पर वो हमारे सपने चुटकियों में कर दिखाते थे। घूमने ले जाते थे देश तो ठंडे पानी का भी ख्याल करते थे, जानकारियों से थे लबरेज और बातें कमाल करते थे। अनुशासन के कड़क खोल में मक्खन का थाल थे पापा, सर पे हम तो नौनिहाल थे पर खुद में बेमिसाल थे पापा। सर पे हाथ रखा और दूर सफर पर चले गए, मुस्कुराती आंखों से देते हैं अपना एहसास आज भी अपने आसपास है पापा, अपने आसपास है पापा। धन्यवाद सचिन जी, आपने मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमने बिजनेस बिजनेस की बातें हम हमेशा करते हैं, लेकिन बिजनेस से थोड़ा सा अलग हटके हमने अपने पेरेंट्स के बारे में बातें करने के लिए आज का दिन चुना। और अभी कल ही गुरु पूर्णिमा भी थी और हमारे माँ बाप से ज्यादा बड़े गुरु इस दुनिया में कोई होते नहीं है, क्योंकि पहले गुरु तो माँ ही होती है जो हमको हर चीज सिखाती है। सो गुरु पूर्णिमा और पेरेंट्स डे दोनों के दिन सभी आप लोग जितने भी उपस्थित हैं सभी के पेरेंट्स को भी मैं, जो इस दुनिया में है उन्हें भी, जो नहीं है उन सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक ऐसा लग रहा था कि यू टुक योर हार्ट आउट योरसेल्फ। आई थिंक द वे यू नरेटेड दिस एंटायर पोएम, आई थिंक इट वाज ट्रूली इंस्पिरेशनल टू हैव इट कमिंग फ्रॉम you. And I think whatever we can do, what all we can do, but I think every bit of every iota of our body, soul, everything will always be indebted to our parents. I think keeping that in mind, I think and paying a tribute to our parents, paying a wholehearted, I think I would submission to all our parents and seeking their blessings. We would like to take this meeting forward. हम इस मीटिंग को आगे लेके जाना चाहेंगे. And to take you through on this journey onwards, I would like to call upon now a very powerful lady, a strong marketeer. She's got amazing creativity, very own sales and event support coordinator, Miss Jasleen Kaur. Thank you so much, Sachin, for introducing me and letting me start with the presentation. जैसे बोला कि I think there could not have been a better start, with Avnish ji and with Sachin actually talking about how important parents are. So without reiterating any of that stuff, one thing that I want to share with all of you before we talk about what is important for them, मैं बस बोलना चाहती हूँ कि if we think for a moment, even before we were born, I'm sure if our parents just got the news that they are expecting a child, their planning started for us, for our education, for our marriage, for our business, for our life. So they have literally planned everything in advance for us. And today, when they are at a stage when our parents are going through aging and where they are becoming seniors, the life actually takes a full circle. Now the responsibility is on us. Abhi hamare upar responsibility hai ki hum unka kaise dhyan rakhein. I'm sure I should not be saying this, but in today's time, when it comes to parents, they never think, okay, my child wants this, should I get it, should I not get it? If they can get it, if they want to get it, they will get it, right? But jab hum bachon ke upar aata hai, we still feel that, okay, there's so much of expenses, we have to do this, we have to do that. Today, just take one moment and think about all the sacrifices that our parents would have done for us. And now it's our time to give back to them for all the sacrifices and all the planning that they did. अभी हमारी बारी है उनके लिए प्लानिंग करने की और उनके लिए सोचने के लिए कि उनको किस चीज की जरूरत है और हम उनकी जरूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं, है ना? So now moving ahead, if we want to help our parents in any way, first let's understand what are the challenges that they're going through. जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं तब तक हम उनको कैसे हेल्प कर पाएंगे, है ना? तो जब एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, what exactly happens? Our cells start growing older, our tissues are getting older, which is affecting not 1, 2 or 3, but it is actually affecting so many body parts, right? So many systems within us, which we can see the changes in. तो आप देखोगे immune system,
during this pandemic, the first major challenge, the first major red alert was for seniors. Why? Because they are having a weaker immune system. So automatically the kind of immune system जो हमारा है, जो as a young person होगा, as we age, it starts to reduce. Free radicals, ये एक बहुत important phenomena है. I'm sure आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, you would have heard about free radicals. This is actually a very natural process. Our body, you know, when we use oxygen, it's when we release carbon dioxide. ये जो oxidation का process है, it is common where there is lot of free radicals which are released. लेकिन as we are aging, again this whole free radical process goes out of hand. ये kind of एक inevitable की चीज है जो हम control कर नहीं सकते. Today's toxicity, pollution इतनी ज्यादा हो गई है कि look at the quality of life. You know, if I talk about my grandparents, they were so heart, healthy, even at 70. But again, if we go generation wise, today, even somebody at 30, 35 is not as healthy as they were, you know, in the previous generations. Joint pain, when they wake up, उठने के समय उनके joints में pain होता है, सोने के समय उनके joints में pain होता है, which can be because of the rheumatoid or because of the arthritis. All of this has to happen. Maybe आप देखोगे सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज उनको स्टार्ट होनी चालू हो जाएंगी. Hair and skin, सबको पता है when we age we start losing our skin starts to show so many signs of aging. Then a lot of people are either in pre-diabetic stage or in diabetic stage. Cardiac complications इतने ज्यादा हैं, heart stroke हो गया या complications related to the blockage. Our body has so many, you know, arteries and veins, and even some small blockage here or there can cause many difficulties in living a very normal and a very healthy life. तो मैं इन सब चीजों के बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहती, but I want to just keep you all aware कि these are some of the major challenges that people automatically face when they are aging, when they are 35, 40, 40 plus. Now, out of these issues, मैं बहुत common दो issues के बारे में डिटेल में बात करूंगी. I have actually picked up two very common issues faced by majority of our aging people, our parents, or in common words, seniors. I would like to refer to them as seniors around us. तो sleep, how important is sleep? सब मानते हो ना कि sleep कितनी जरूरी है. Sleep is not just for the relaxation, but actually sleep is for the rejuvenation. जब हम सोते हैं, the sleep actually helps our body to be healthy, to be rejuvenated. You can be happy only if you had a good night's sleep, है ना? But once you age, what are the problems जो आपकी sleep को affect कर सकते हैं? Firstly, pain. If you have body pain, it will affect the quality of your sleep. आपके जो health conditions हैं, if you're taking too many medications, वो medications आपके thyroid का हो सकता है, blood pressure का हो सकता है, hormonal changes. So all these different medications directly affect the sleeping pattern. तो जो आपका normal sleeping system था, वो affect हो जाएगा, और आप जो 10-12 घंटे की नींद या 8-10 घंटे की नींद ले रहे थे, it will not be possible because of these aging issues. आपका lifestyle, अगर आप exercise ज्यादा कर रहे हो या अगर आप TV ज्यादा देख रहे हो, specifically during this pandemic, we all have, you know, so much started, you know, relying on news TVs or relying on mobile phones, which is not very good, you know, for the sleep cycle. और क्या issues हो सकते हैं? Constant tendency to pee. So we'll actually lose the control of our bladder while we are aging. Menopause again can affect your sleep. So ये सब broad items है, broad classifications हैं जिसकी वजह से aging या जो seniors हैं उनकी sleep affect होती है. You know, this is slide पे I actually want to tell you something that when we are growing, you know, I have seen this, I'm sure many of you would have felt it. Our parents never show us their vulnerability. Even if they are not feeling well, they always say, no, I'm fine, I'm strong, and there's nothing happened to me.
वो हमेशा अपने आप को ऐसे ही बताते हैं. So now it's up to us that we should identify. You remember the times when you were just coughing, your mom would have said, oh, you have a cold, you have a cough, आप ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो. वो हमारी हर चीज पे ध्यान रखते थे, right? Now it's us that we find out whether are they having any such issues. तो insomnia अगर उनको हो रहा है तो आप कैसे उसको पता करोगे? So there are some signs and symptoms जो आप देख सकते हो. अगर आपके parents में अगर वो दिन के दौरान drowsy हैं, tired हैं, even after sleeping, but if they still feel tired, that means their sleep is not enough. Their quality of sleep is not good. अगर उनमें थोड़ी irritability है, here I would actually like to say that many parents, many seniors have an issue with sleeping properly, but they will not admit it, and that shows in the irritability they have or their memory. Unki memory ko bhi affect hoga. They will not be as sharp as they should be, as they could be after the night sleep. है ना? Depression, agar if you feel that they are very sad, they are depressed, please try to probe them and understand कि उनको sleeping की issue हो रही है. Only once you figure out that there is some issue, we can think about how we can help them. है ना? तो now how do you help them? हमने देख लिया issues, हमने देख लिया challenges, but now what can we do to help our seniors sleep better? So here are some very simple tips जो आपको एक hygiene, sleep hygiene overall आपको बताते हैं. Ensure कि your bedroom is very very peaceful. आपका जो bedroom है बहुत tidy environment हो. It should give you the sense of relaxation, and if possible, to maximum extent, use your bedroom only for sleeping. For your working or your TV activities, your other activities, keep it restricted to outside. Use your bedroom for sleeping so that your mind connects that कि हाँ अगर बेडरूम में जा रहे हैं तो हम रात को सोने के लिए जा रहे हैं. Avoid heavy meals. I'm sure आप लोगों ने सुना ही होगा, before you sleep 2 to 3 hours, avoid heavy meals, avoid alcohol, avoid caffeine, because all of that can disturb your sleeping pattern. Any bright lights, we all have this habit of, before going to sleep, looking at the mobile phone, checking our messages, but that is not good for us, not good for our vision, and not good for our sleep cycle as well. तो 2 घंटे सोने से पहले इन सब चीजों पे ध्यान मत दें. Keep all your, electronics aside, and just maybe take some time to talk to yourself, plan your tomorrow, and so that you feel better to go to sleep. तो ये हो गए थोड़े generic tips sleep hygiene. और क्या कर सकते हैं? What else is in our hand? हमारे हाथ में हमारी lifestyle है ना? Whatever we put into our body, whatever we eat, or whatever we choose to avoid, also highly affects our quality of sleep. तो जो red पे है, those are complete no-nos. जो blue में है, those are the good things which will elevate the quality of your sleep. So quickly going through carbs. If you're having too many carbs, it is going to affect your sleep. रात bed के पहले directly heavy meals, high sugar diet. We all know the adversities or complications if we have too much of sugar, and it is not only just for your insulin, but it is also with your sleep. Having lot of fats, alcohol, strictly, कई लोगों को तो लगता है कि अगर मैं alcohol, if I take alcohol मुझे अच्छी नींद आएगी, but that is just your perception. अगर ऐसा होता है, if you are taking alcohol, आपको रात की जो आपकी deep sleep है वो affect होगी, and you will wake up, you will have a tendency of waking up again and again, जो आपका पूरा purpose खराब करेगा. Correct? And what are the good things? Take regular meals, एक fixed schedule रखो, उठने की, सोने की, खाने की, so that your body knows that this is the time to eat or this is the time to sleep. अगर आप non-vegetarian हो तो you can have fatty fish. If you are a vegetarian, avocados. These are good sources of good fats, which also helps in giving you nice wholehearted sleep. So not going into too many details, जो आपकी screen पे है, very simple. Follow these steps.
simple steps and ensure कि आपकी जो नींद है it is going to be better. Correct? नेक्स्ट किस पे बात करेंगे हम? तो स्लीप तो हमने एक इश्यू देख लिया. नेक्स्ट इज स्किन. ये अगेन मेन ऑल्सो प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम स्किन की बात करते हैं ना तो मेन सोचते हैं कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ विमेन के लिए है. लेकिन जब एजिंग होती है और एजिंग के साथ जो फिजिकल चेंजेस आपके स्किन में आते हैं, दैट डज नॉट सी मेन और वुमेन. करेक्ट? दैट कम्स टू एवरीबडी इन जनरल. तो what happens when you age? तो इसके बारे में if we go little bit into detail, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा 3 main proteins. जैसे when we talk about our body, we talk about fats, carbohydrates, proteins, right? We ensure that we are giving our body all of these items. वैसे ही when we talk about the skin functioning is based on these 3 important proteins, which you can see on your screens: hyaluronic acid, collagen and elastin. इससे आपकी स्किन यंग भी रहती है, प्लम्पी रहती है. So all these good things जो एक न्यूबॉर्न बेबी के स्किन पे हम देखते हैं, right? All that is thanks to these 3 elements. And ये भी you can see on your screens that as you're aging, so 35 पे all these 3 proteins are at a very high amount. It is our body, our skin is producing it, and we are, taking the benefits out of it. But as you're 45, you can see that the production is reducing. The concentration of these proteins घटती जाएंगी हर साल में, 10 साल में. So at 55, you can see your skin is not having enough हाइलुरोनिक एसिड, आपका कोलाजन भी कम हो गया है, आपका एलास्टिन भी कम हो गया है, और अब हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर रही है. सो दैट इज वेयर इज द मेन चैलेंज. सो हियर दिस इज हाउ द स्किन शुड बी. बट एज यू कैन सी, एजिंग में आपको फाइन लाइंस दिखेगा, रिंकल्स दिखेगा, आपकी स्किन सैग होना चालू हो जाएगी, राइट? इट विल नॉट बी एज टाइट एज इट शुड बी. सो वो हो गया इंटरनल. Externally, again, how do you find out कि now my skin is going through aging process? How can you figure out? आपकी स्किन पे डिस्कलरेशन होगा. डिस्कलरेशन मतलब आपकी पूरी स्किन एक कलर पे नहीं होगा. Your forehead will have a little darker color, your skin might have a little light color, so there will be patches, uneven skin tone. Dehydrated skin, always your skin will feel very dull, बहुत dry feel होगा, बहुत dull होगा. All this is happening because जैसे हम एज करते हैं ना, हमारी स्किन becomes very weak, it becomes very fragile. उसकी वजह से plus whatever fatty tissues we have under the skin, it starts to reduce. So ये जो shape है, the plumpness, it goes down and you lose the shape of the face. Visible pores, receding hairline, ये तो I'm sure सब देख सकते हैं. One major challenge, again, if we talk about today's time, this is happening as early as even 30 plus. People are losing their hair because of the high amount of stress, pollution, and obviously aging is a major factor. So ये हमने देख लिए signs of aging and how aging happens. Let's see, let's come to the good point. How can we prevent this? ठीक है? Obviously, these tips do not guarantee that your skin will never age, because that is inevitable. You cannot stop that, right? Like if today I'm 27, 28 years old, next year I will be 29. I cannot go backwards. So usi tarah, please understand that these tips will not completely negatify the effects, but it will help you. These things will help you to ensure कि आप अपनी तरफ से whatever is in your control, you can follow it to ensure good skin, है ना? So sleep, as you can see, sleep is very important for your beauty skin also. Pani, minimum 3 to 4 liters should be your water intake, and I'm saying minimum. अगर आप 5 लीटर भी पीते हो, it is good for you, but minimum should be 3 to 4 liters. Eat lot of fresh fruits. Sunscreen, I think I can take a moment here and just see, we have a good number of people. Quickly आप लोग chat में डाल दो या आप hand raise करो. यहाँ पे how many people have been using a sunscreen from a long time? मतलब at least minimum 5 years
you're using sunscreen every day? I can see only one. Achira ji has raised her hands. I can see. Others? Avnish ji, aap lagate ho? Yes? No? Lagate ho? Good. Okay. Others? Okay, me, good. I can see, but अगर me में भी सिर्फ 5 लोगों ने जवाब दिया, I can at least imagine there are 50 people who are not using a sunscreen. It's a very simple thing. We overlook it, but we should be using sunscreen even if you're sitting at home, even if you're going out. Sunscreen is basic necessity of our skin. And do not use any harsh products. मैं यहाँ पे किसी product को recommend नहीं कर रही हूँ, but I'm just saying whenever you buy a product for your skin, go through the label, do check if they are having any harsh ingredients and try to avoid them. ठीक है? बाकी on your right side again I've mentioned some mistakes जो हम लोग सालों से कर रहे हैं. We are doing a lot of these mistakes and it is not difficult. We can quickly change them. It is all on our habit. So wash your pillowcase. I'm sure many people overlook this, but wash your pillowcase जो अपना use करते हो, at least 3-4 days में wash it, because whatever the dust or dirt falls from your hair also can, you know, spoil your skin. Not exfoliating. अगर आप scrub नहीं कर रहे हो या अगर आप ज़्यादा scrub कर रहे हो, या तो one single thing, I'm sure all of you are constantly touching your face. Do not touch your face. See, Achira ji is touching her face right now. So don't touch your face constantly because that also affects in the aging of your skin. बाकी बहुत simple do's and don'ts हैं on your screens. Please have a look. अगर आप चाहिए, do take a screenshot, keep it handy and try to change your simple habits. ठीक है? Now moving ahead, again something which is in our kitchen. India specifically, we always say that our kitchen is so powerful, it has the power to do anything. है ना? So here again are some best and the worst foods for your skin. Doesn't mean you should not touch what is on your right side. You can, but do not overindulge. इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दें. जितना हो सके cut back करें. और जो left में है, I'm sure you can go all out and do as much as you want. Take it as much as you want, क्योंकि वो आपकी skin के लिए बहुत अच्छा है. Specifically watermelon, वो आपकी skin को hydration देता है. It keeps your skin plump and hydrated. Green tea, it is having so many antioxidants that it can negate the effect of free radicals. जो हम पहले free radicals के बारे में बात कर रहे थे, green tea has antioxidants which can reduce the effect of your free radicals. ठीक है? उसके बाद we have green leafy vegetables. I think these are simple. मुझे इसको explain करने की जरूरत नहीं है. But how much ever possible, please cut down on sugar. It ages your skin. Cut down on soda. वो भी आपकी skin को बहुत जल्दी aged दिखाता है. ठीक है? So this was from my side specific to your aging with sleep, aging and skin. I'm sure many people are having these issues, which I will also have a quick question for all of you, Abhi, before we move on to the next segment. Before I leave everybody, I wanted to leave on a very good, happy note कि aging is bound to happen. You cannot change it, lekin you can help. You can make sure that you're aging in a healthy manner. You can see we have some good examples. अगर आपने मिलन सोमन को देखा है तो you can never guess his age, right? He has kept himself so fit, so healthy. So do some tips, you know, do some things जो आपको motivated रखें, जो आपको drive दें. Exercise regularly, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अपने brain को challenge करते रहो. Do not be in a very sedentary lifestyle. Even looking forward for newspaper पे जो सुडोकू आता है, you know, challenge yourself, do something, engage yourself. And as you're aging, please keep a check on your health checks. Do not miss out. आपका dental health हो गया या regular checkups हो गया, because those things will also help you to identify what is it that your body needs. Correct? So that was all from my side. You know, I really wish and hope ये चीजें आपको थोड़ी सी और idea दी होंगी जो आपके control में है on how you can help your seniors or help your parents. After seeing all of this, now I would like to call on somebody who has a lot of expertise, who also comes from
M-Farm background. उनका direct selling में भी 7 years का experience है as the operations manager, and he's recently joined us also under Sushant's guidance. So put your hands and please welcome Bimal from Healy. The stage is all yours, Bimal. Okay, thank you, Jaslyn. Thank you for such a beautiful introduction for me. So आज मैं जो हूँ आप लोग से कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहला चीज है, जसलिन ने जो आपको दिखाया सारे चीजें, ये सारा टिप्स है। ऑनेस्टली मेरे से बोलना कि कितने लोग एक्चुअली ये सब चीजें कर पाते हैं। रेज योर हैंड प्लीज, ऑनेस्टली। ओके, गुड, 1 2, आई कैन सी द स्क्रीन। ओके, तो मैक्सिमम जो है हम लोग नहीं कर पाते। 3 नाउ 2, ओके, 4, गुड। सो दिस वन हम करने के लिए कोशिश करते हैं, पर टाइम के हिसाब से कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसका पीछे रीजन है, बिकॉज वी आर इन द रेस ऑफ द लाइफ। क्योंकि हमको लाइफ में बहुत सारा चीजों का अचीवमेंट करना है। हमको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है, और स्कूल भी चाहिए उसके लिए, अच्छा कॉलेज भी चाहिए, अच्छा शादी के लिए बहुत सारा चीजें देना है, राइट। ये सब चीजें रहता है। उसके चक्कर में हमको वर्क लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। वर्क लाइफ और हमारा फिजिकल लाइफ दोनों का हम कभी बैलेंस नहीं कर पाते। ज्यादा हम लोग वर्क लाइफ के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाते हैं। जैसे वर्क लाइफ पे आ जाते हैं तो हमारा फिजिकल लाइफ जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते। कुछ ऐसा चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इंडिया जो है बहुत पुराने सालों से डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट का था। अगर मैं बोलूंगा जैसे एंशिएंट टाइम हम लोग का क्या चलता था इंडिया में, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, अरोमा थेरापी, देन एक्यूपंक्चर थेरापी, एज वेल एज मेडिटेशन। ये सारा चीजें जो है बहुत दिन से इंडिया में चलता था। एक छोटा सा भी और एक एग्जांपल है, जब हमारे पूर्वजों के पास अगर जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, रास्ते में उनके पास चप्पल नहीं होता था, राइट। वो खाली पेट चलते थे। जैसे ही वो खाली पेट चलते थे, जो सारा एक्यूपॉइंट का पॉइंट होता है वो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव होता था और हमारा बॉडी में वो एनर्जी देता था। पर आज के जमाने में वी हैव सच ए गुड लाइफस्टाइल, तो हमको कभी घर में भी लोग चप्पल पहनने लगे, राइट। दिस इज अ कल्चर, वी कैन नॉट चेंज दैट वन। फिर भी क्या होता है ना, बहुत सारे जो आता है वो नहीं होता है, हमारे बॉडी को जो चाहिए वो नहीं दे पाते। सो उसके बाद फिर क्या होता है ना, अभी हम लोग क्या है, नॉर्मल कुछ भी होता है तो वी वेंट टू डॉक्टर्स एंड ट्रीटमेंट। वो भी जरूरी है आज के जमाने में, हर लोग उसके ऊपर आते हैं, करते हैं। पर कभी कभी ये सब चीजें जो होता है प्रॉपरली क्योर भी नहीं करता है, जस्ट इम्पैक्ट करता है लाइफ को थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए। अगर हम एंशिएंट में जाए तो वहां पे ये जो सारा थेरापी था, ये जो सारा थेरापी है, और हमारे पास फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये सब मिलके एक नया चीज का इन्वेंशन हुआ है जो हिली के पास है। उसमें से हमारा एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। एंशिएंट कॉन्सेप्ट मतलब मेडिटेशन है उसमें से, राइट। उसमें से देखा जाए तो एक्यूपंक्चर थेरापी है, और उसके साथ फिजिक्स भी है। आज के जमाने का फिजिक्स है और बायोलॉजी है, तो सब मिला के आगे एक आता है फ्रीक्वेंसीज फॉर हीलिंग। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो हिली, वेलकम टू द हिली वर्ल्ड। हिली में क्या है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, और हमारा इंडिया का जो बहुत पुराना तरीका है ट्रीटमेंट करने का वो भी इसमें है, राइट। ये सब मिलके हिली बनाया हुआ है, जो आप कभी भी कहीं भी आप काम करते करते इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको काम करो, जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी लगा के बैठा हूँ। सो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो वर्क लाइफ और हमारा जो हेल्थ का बैलेंस, ये प्रॉपरली हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। उसके बारे में और थोड़ा सा जानने के लिए मैं आगे जाना चाहूंगा। एक वीडियो है, देख लीजिए। Justin, please play the video. Yeah, just a second. Healy is the new revolutionary machine that supports you in all the important areas of your life. This easily wearable device helps you to improve your well-being in a holistic and sustainable way. Whether for health, wellness, fitness, beauty or the mind,
Healy is extremely versatile. Healy's unique and specific frequencies can be used at any time to help on all levels with your overall well-being. You can easily navigate fast through the list of programs. The app is simple to use, and once installed, you can quickly choose the program that you desire and then transfer it to your Healy. With the 16 program groups, you have access to over 140 programs. The program groups can help you, ranging from stress, anxiety, pain relief, fitness, beauty, and peace of mind, or simply you wish to get a great night's sleep. Healy supports you in all areas of life. Try out Healy now for a better and healthier life. So we'll learn a little bit about Healy through this video. Actually, now I'll be explain to you how a Healy is working. So what are the basic concept, कैसे काम करता है, right? उसको लेके हम थोड़ा बात करेंगे अभी. इससे पहले I would like to share some of the terminologies. I think कुछ लोगों को English चाहिए, कुछ लोगों को हिंदी चाहिए. So I'm a bit confused. So I will be mix of Hindi and English both in that. So IMF, what is IMF? IMF is a individual microcurrent frequency. I know many of you are using that one, so you have the ideas. And once again, I am repeating all this. Individualized means as a person, I have certain individualized. What is my food? What I like? Whatever I like, maybe others don't like. Whatever I wear, like to wear, others may not wear. Like that only. That is the individualized. Every person has their own certain things, that is known as the individualized. Microcurrent is a very low current, is a very teeny and little bit current you can feeling. That is the example of when you take a battery and touch it in your tongue, you will feel a little bit sensation. So that is known as the microcurrent, and we measures the microcurrent through microamperes. Microamperes is a small, you can say, is a unity of measurement. Like for the distance, we are using kilometers. Similar way, for the microcurrent, we are using the unit of microamperes, and that is 0 to 400. It is a very small feeling, sensation feeling, you will feel that one. Though our body is also having the current electric capacity that is around 60 to 70 volts also there. Microamperes you can feel in our cell also. Next, go to the frequency. What is the frequency? Frequency is a wave passed through a fixed point at a certain period of time. एक टाइम पीरियड के हिसाब से एक ही जगह पे कितनी बार वो वेव जाता आता रहता है, उसको हम लोग एग्जैक्टली बोलना चाहें तो हिंदी में इज बारंबार आता. तो ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली द वेव पास. नेक्स्ट टर्म इज harmonization. Harmonization means working on those areas complementary in order to have the plans working together for the achievement. Like do example I'll share with you. First example is our human body. It's of the hands of the certain work, right? Then brain of the certain work, leg of the certain work. So all together put together make us a human to do the certain performances activity in our day-to-day life. Like that, whenever we have a team, in our team, some people are very good in product knowledge, some people are very good in product training, some people are very good in sodo plan actually. So we are put together with we are working for a Healy to go develop our business as well as to our earning capacity. So that is the main motto. But you have different part of people are there who they are contributing their best to get the harmonization. That is the meaning of harmonization. Next is a bioenergetic. Bioenergetic is a biological word. It's a mix of biochemistry, biology as well as chemistry and cell biology. So bioenergy, what? Bioenergy is the process of constant energy flow. जो energy होता है, that flow through a living systems. हम लोग living system में, we all animals, trees, like in that living systems, the energy, the way of energy flow, that is known as the bioenergetics. Bioenergetics mainly is the important for our business and for our concept also. And bioenergetic, there is so many steps are there, anabolism, metabolism, catabolism, like all the steps are going through to help us to flow of the energy through the system. Next slide. So after this, now I'll tell you what exactly how a Healy works in our body. Previously I told you that IMF means individualized
microcurrent frequency. So there are Healy contains more than 100 individualized IMF, the Hindi 100 individualized microcurrent frequency programs using this frequency for harmonizing the bioenergetic field. That means we have certain kind of functions in our body. Like every organ has its own functions. Heart is used for the circulation system. Lungs is there for the breathing. Kidney is there for the excretion. So every organ has its own function and it requires its own microcurrent. This is as a personalized, I can say, whatever a heart is required, the microcurrent, the kidney didn't require that much of microcurrent. So that is vary. As per this Healy programs, fixed for every organ, every program ke liye, is a fixed amount of microcurrent. What much microcurrent is required for heart, that is in that program, it is fixed. What much microcurrent is required for our brain, that is fixed. What much microcurrent need for our kidney, it is also fixed. So like that only every organ functions, it is fixed in our programs. So go to the next slide. If we are using that Healy, so what will be the benefit, right? First is increases the muscle. It's a common concept actually. I am sharing with you. After that, I will tell you exactly what program will be give you the what result. So basic concept I am sharing with you is increases the muscles re-education. Muscles re-education means there is a homeostasis. There is a concept between brain and muscles. As a nerves are there, we send the message to our each and every muscle and every organ that you need to be function properly. Sometimes where the aging process starts, just say age process start ho jata hai, that nerves are little bit weaker and that the level of current need our in a cell, it is gradually decreased. When it's come to the 42, people are literally lazy feeling. When it comes 0, then people may not be in this world. So like that only. After because of our lifestyle or stress, everything, so this electricity whatever need in our body is gradually decreased, and we use that Healy, that improves the muscles re-education. That means there is a nerve impulsion. I will give an example. When there is a fly sitting in my hand and in my left hand, and that impulse goes to my brain, and my brain told to right hand just go and beat him, kill him, right? Like that only. This is the impulse through these nerves. So Healy helps to improve the nerves flow of the current in that nerves to message properly to the muscles, and it improves the muscle. That is a homeostasis between the muscle and brain. Whatever the brain is telling, and the muscle will be exactly doing the same thing, so that we will not face any problem in that life. Second, it increases the ATP formation up to 500. ATP, all of you know, is adenosine 5-phosphate is the common name, and ATP is the energy. It just gives energy in our body to perform certain works, which we whatever work we want to do. For that, we need energy. Like the example I'll give you, when we are driving, right? We are driving a car or bike, so we need some fuel. Fuel means either it could be a petrol or diesel. We are putting that fuel is give the energy to that certain vehicle to drive. Like that only, ATP is the energy to our body which gives to perform the certain types of works, and Healy improves it 500%, and it is clear in a study report. So you can check in that our data, it is clear over there. It's increased 500%. That means you feel whatever work you want to do. Suppose your organ is, I will take the example of a heart. Heart is become weak. Why weak? Because it don't have that much of ATP. So heart may not be function properly. Heart muscles may not, because they do not have energy. When you are using a Healy, right, what will happen? So that will increases the ATP formation of whatever the cells in the heart. So it will increase the ATP formation. That means heart will be got the energy, and it will work as per his process and properly, so that we won't face any difficulty in the life. We'll be in a balanced life now. Like that only it's working. It's not for the, I took the example of heart. It's every part of in our body, because it's all are made up of the cells, and inside the cell there is a mitochondria, and inside the mitochondria ATP is there. So every cell is contain this one. To remain healthy, we should use that Healy, and we'll stop the aging process also. Third is increases the formation of collagen up to 70%. It is also in the study. We are studied on that whenever you are using a Healy, so it increases the collagen. Collagen is one of the protein, as
shared just before shared with Jocelyn. She shared with you collagen and elastin. So collagen is one of the protein which repairs your tissues damage. Tissues जो भी damage होता है उसको repair करने में help करता है. And elastin is one more protein which is also helps to maintain the elasticity. Elasticity means that I will take the example of rubber. Whenever I stretch, so it moves like that only. Sometimes we are also feel when there is not the elasticity, sometimes our hand will be like this. We cannot break it down because of the less of elasticity. We cannot perform any work. This is the one example in the outside, but inside there is the electricity is more important. What is that actually? For a heart, if I take the heart is like that pumping like this one. So there is the elasticity is more important in there. Sometimes what happened when there is a loss of elasticity, there is a cardiac arrest. We say it's a cardiac arrest and people will be die. There is a blood is inside that and it cannot don't have that much of strength to expel the blood again. So what happened exactly? That time the heart is remains plugged and that is the cause of the cardiac arrest. Whenever we are using Healy, so that will what happened. It will improve the elasticity of each and every cells organs. So that will be the overall function will be remain good. We can maintain as per what is the requirement and performance that will go after that. Then as improved circulation. What is the meaning of improved circulation? As all of you know, circulation is a vital part in our body. I will give you the example of if we take a house and there we plan for the water supply, right? Some taps will be go to the washroom and some are in the kitchen and some are maybe some other places. After a long term uses water, there is some garbage inside that the pipes and it will slow the blood like the flow of the water. Then we face difficulty in kitchen. Then we face a difficulty in washroom. We don't have the water. Then we have to take somewhere else and adjust all these things. So like that only in our body there is so many of what you can say arteries and veins. And if I join these arteries and veins, it could be cover of a wall. Actually, it will cover an entire round of the wall. Just imagine how much is there. So it's a very small and teeny these nerves are there. Sorry, arteria veins are there. So exactly inside that the blood flow is required, blood is flowing, but after certain period of time and due to the food habit, due to maybe the lifestyle, all these things and some environmental factors also due to the one more now a disease is a stress. So people are telling us stress. Stress is a major concern about. So due to balance the family life, we sometimes need to take the most stress due to all this whatever happened. There is a garbage again known as cholesterol. All of you know that, and that will be deposited inside that arteries and veins, and it will start a blockage. When this blockage has happened, what happened? The blood is not always blood carry what the oxygen, right? The oxygen is not reached to the proper organ properly, right? For that brain is a major food is blood, we say. Why? Because this carries oxygen. Heart, we need the oxygen. Whichever places oxygen is not reached, that cell will be died very slow. So as the process, aging process starts, so many of complications start, so many of blockages start in that arteries and veins. We cannot clean that one actually. We have a major challenge in that. For a pipe, we can cut down, remove it and put new one. But in our body, we cannot remove that one or cannot wash that one. We need to clean that one actually, but no certain areas. But if you are using Healy, so that will increase your circulation, blood flow rate. If you increase the blood flow rate, so there will be no garbage inside that artery or vein. That is no cholesterol will be remains there. So it will be flow properly. And once the flow is properly, so every organ will be remain healthy as well as human also remain healthy. So all these are benefits of healing. And this is the basic concept I just share with you. Maybe next time onwards, I will share the more details. We have some more about the programs and what exactly it's work in your body and how it gets released. And one thing I feel about Healy, that is my personal experience. I came from the eastern part of India to south part. So I faced a little bit difficulty last 4 or 5 days regarding the sleep actually. I could not sleep properly. So I used that device and I got a good sleep actually. That is my personal experience. I experienced that one last 4 or 5 days actually. It's a good for me. So I hope on this Parents Day, that could be a better gift for your parents who give you that much in your life. And you should be gift at least this one to them to remain healthy. So thank you. Over to you, Jocelyn. Thank you very
Well, I think we some really very interesting facts and technical aspects that you shared with us about Healy. And I think while Justin was speaking about the aging issues, the process, and what to what not to do, and the way kind of helped us understand the way our Healy offerings can help us deal with those situations and issues. I think it really made a lot of sense to all of us. Moving ahead, and since we thought while we're talking about Healy offerings and things around it, it will be a good opportunity for us to also invite few of our own members who have joined recently Healy and have been using Healy, and would like to hear from them about their experiences, how have they been using it, what's been the outcome about the Healy product and all. And to do that, I would like to call upon Mr. Nathalal Thanki. He is a retired government official. He's been with OSO since 1985. He is an expert meditation, and he's been traveling across India teaching about meditation to all the enthusiasts. He's also been an ex-Rotarian as well, and we all lovingly call him as Natha Bhai. So Natha Bhai, please welcome on the virtual screen and help us share your experience about the Healy products. नमस्कार सभी को और पेरेंट्स डे की शुभकामनाएं सभी को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। Yes sir, we can hear you. ओके। तो मैं वैसे पोरबंदर गुजरात से हूँ। मेरा नाम नाथाभाई थानकी है और पोरबंदर के अंदर दो महान हस्तियां हो गई है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी और दूसरे महात्मा गांधी। तो उसकी जन्मभूमि से मैं हूँ। और हिली के बारे में मैं बताता हूँ कि हिली इसलिए मेरे पास आई है कि मैं इसी कोई चीज को ढूंढ रहा था। मेरी जो पेरेंट्स डे की आज बात की जसलीन जी ने और अश्विन जी ने कि पेरेंट्स के बारे में जितना भी करें हम कम है। तो मेरे मम्मी की उम्र है 85 साल, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें थी। बॉडी भी वीक हो गया था, उसका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। कोई उसके पास में पूरा दिन बैठे रहना चाहिए हाथ पकड़ के, किसी को वो दूर जाने नहीं देती थी। और मैंने बहुत सारी उसको फ्रूट सप्लीमेंट दिया, लेकिन उसमें उसको बहुत दिक्कतें होती थी कि इसमें स्वाद कट्टा है, ये है, इसका उड़कार आता है, ये वो। तो मैंने एक दिन बोला कि मम्मी ऐसी कोई चीज आ जाए कि जो आपको बाहर से ठीक करे, खानी पीनी ना पड़े। तो मैं कहती ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते कि ऐसी कोई चीज हमको मिल जाए तो आप ठीक हो जाए। तो ऐसे 2-4 दिन हुए तो जो मेरे फ्रेंड है अटलांटा से हेमू भाई पटेल अभी मीटिंग में है, तो उसने मेरे को बताया कि नथा भाई ऐसी ऐसी एक चीज आई है और ऐसा ऐसा है, मैंने मंगवाया। तो मैंने बोला पहला आप आ जाए तो हम पहला थोड़ा ट्राई कर ले, बाद में मंगवाते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर उसका आ गया। तो उसी समय मेरे वाइफ को बहुत बुरी खांसी थी। खांसी इतनी कि 1 सेकंड भी नहीं रुकती थी, पूरा लगातार उसकी खांसी, और उसकी कोई दवा नहीं थी। मैंने पिछले साल वो बुरी खांसी हुई तो मैंने 1 हफ्ते के अंदर डॉक्टर को 30,000 रुपया दिया, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। तो इसी समय मैंने बोला हेमू जी को कि भाई मेरे वाइफ को आप बिलिंग दीजिए। मैंने पूरा डेटा वगैरह भेज दिया। तो उसने 10 मिनट बैठाया, 10 मिनट के अंदर एक सिंगल खांसी भी नहीं आई उसको। और 10 मिनट के बाद जब उसको खांसी आ रही थी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी टूट गई थी, वो 50% से कम रह गई थी। फिर मम्मी को हीलिंग दिया, मेरे को मेडिटेशन में उसने बिठाया, मेरे को अच्छा लगा। तो फिर हमने उसी समय गोल्ड हीली मंगवाया। और गोल्ड हीली आने के बाद 1 हफ्ते में मुझे लगा कि ये मैंने गलती कर दी है, अभी मेरे को वो रेजोनेंस वाला मॉडल लेना चाहिए था। तो उसी समय जो भी हुआ ठीक हुआ। मैं बोलता हूँ कि जो भी होता है भले के लिए होता है। तो उसी समय 1,96,000 था रेजोनेंस का। तो मैंने पैसा ट्रांसफर का वो डेटा भी डाल दिया था 1,96,000, लेकिन मैंने थोड़ा वो लोभ के हिसाब से ऐसा कर दिया कि चलो भाई ये 42,000 वाला लेते हैं। लेकिन इस लेने के बाद मैं अपग्रेड करने का सोच रहा था, तो कंपनी का स्कीम आ गया कि भाई अभी 1,19,000 में मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी फायदा है, ये गोल्ड हीली भले रहा, और 1,96,000 वाला 1,19,000 वाला भी मंगवा लिया। तो इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। मम्मी की जो चिड़चिड़ापन था वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो लोग पास में पूरा दिन बैठे रहने थे तो वो नहीं हुआ। पहले गोल्ड साइकिल का हमने 2 बार प्रोग्राम रिपीट लिया, फिर मम्मी के लिए हमने डीप साइकिल का प्रोग्राम लिया, एप्लीकेशन 1, 2, 3। तो बिल्कुल उसका नेचर शांत हो गया, किसी पास में बैठने की जरूरत नहीं, आराम से वो घर में घूम फिरने लगी। और 1.5-2 महीने के बाद मैं ऊपर रहता हूँ, मम्मी की उम्र के हिसाब से नीचे वाले रूम में रहते हैं, तो अभी ऊपर वाले रूम में भी आकर बैठते हो।
जीना चढ़ के ऊपर आ जाते हैं। तो ये उसका फायदा हुआ। फिर मेरा खुद का एक दिक्कत था कि हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल का यूज नहीं करते, नीचे बैठते हैं जमीन पे पलाठी लगा के। तो मैं पलाठी लगा के बैठने के लिए किसी चीज का सहारा लेके बैठना पड़ता था, सीधा मैं बैठ नहीं पाता था। तो 15 दिन के अंदर मैं खुद ऐसे ही पाँव क्रॉस करके मैं बैठ जाता था। और मेरी वाइफ भी पलाठी लगा के नहीं बैठ सकती थी, वो डाइनिंग टेबल पे बैठती थी। वो भी 15-20 दिन के अंदर वो भी नीचे बैठने लगी, उसका जोड़ों का दर्द था बिल्कुल चला गया। फिर एक रात मेरे ग्रैंडसन को पेट में दर्द हुआ रात को 4 बजे, 10 साल का है, 11 साल का। तो इतना खराब पेन था, तो मेरे को उठाया कि इसको पेट में दर्द है और हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैंने बोला भाई 10 मिनट वेट करो, मैं अभी हिली उसको देता हूँ। तो मैंने उसको बेल्ट बांध के प्रोग्राम दिया डाइजेस्ट ऑल। तो 10 मिनट के अंदर उसका पेट का दर्द गायब। वो बोले दादा भी बिल्कुल ठीक। पहले तो बोल रहा था हिली का छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरे को ये सहन नहीं होता। लेकिन हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां भी टाइम तो लगेगा ना, वहां डॉक्टर आएंगे, उठाएंगे, वो ट्रीटमेंट देंगे, इंजेक्शन देंगे, वो कोई भगवान तो नहीं है कैसे ठीक कर देगा। तो हिली तो भगवान से कम नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, बोलता है हिली भगवान ही है, जो बोलो उसे हो सकता है। मेरे एक फ्रेंड की वाइफ है, उसको स्टोन की दिक्कत हो गई। तो बोले 3-4 दिन से उसको यूरिन पास नहीं हो रहा था और इतनी बुरी जलन हो रही थी, वो परेशान थी। तो मैंने उसको हिली दिया और 1 घंटे के अंदर ही उसका स्टोन निकल गया। और यूरिन इसको 3-4 दिन से बंद था, तो करीब 2.5 से 3 लीटर यूरिन पास हुआ और उसकी जलन बलन खत्म हो गई। उसका फोन आया 1 घंटे बाद कि मैं अभी बिल्कुल ठीक होना था भाई, आपका बहुत धन्यवाद। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास। कई लोगों को हमने ये कोरोना में भी ठीक किया है। मेरा कजिन ब्रदर था 72 साल एज के, तो उसको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। तो मैंने उसको यहाँ से हीलिंग दिया, तो उसको 1 घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया और पूरी रात उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑक्सीजन पास में रखा था लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, वो बिल्कुल ठीक हो गए। और हाँ, दूसरी एक बात कि पहला जो मेरा मम्मी को हमने ये दिया ना, रेजोनेंस आने के बाद हमने प्रोग्राम सिलेक्ट किया। तो प्रोग्राम के अंदर जो मटेरिया मेडिका है, तो उसके अंदर आया न्यूरलजिक पेन। तो मेरा मम्मी का हमने 2 बार सर्जरी करवाई न्यूरलिक पेन के लिए, और अभी भी न्यूरलजिक की टेबलेट उसको चल रही है। तो हिली को कैसे पता चल गया कि इसको न्यूरलजिक पेन है? तो उसके अंदर न्यूरलजिक पेन की दवाई जो मटेरिया मेडिका के अंदर जो उसकी होम्योपैथिक दवाई है वो आई। दूसरा एक उसको अभी दांत निकलवाया था, तो उसमें एक दवा ऐसी थी मेडिसिन कि वो दांत निकलवाने के बाद का दर्द, तो वो भी उसका वही दवा, उसका दांत दांत निकलने के बाद का दर्द भी था। तो ये 2 ही चीजें इसमें आ गई। तो मेरा तो समझा कि ये भगवान ही है कि जो हमारे जो भी प्रॉब्लम हो पहचान लेते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। तो इसी तरह बहुत से लोगों को हमने ठीक किया है। मेरे करीब 200 लोगों को ठीक किया है, तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी को भी कुछ भी होता है, बुखार तो 10 मिनट में उतर जाता है। किसी का फोन आता है कोरोना के अंदर, मेरे मित्र है उसने भी रेजोनेंस लिया है, उसके परिवार के अंदर 11 लोगों को कोरोना हुआ था। तो जब रात हुए तो उसको बुखार आता था, तो हम 10 मिनट के अंदर बुखार ठीक करते थे। तो हिली तो हम समझे कि भगवान ही है। और दूसरा एक पेरेंट्स के बारे में मैं सभी लोगों को, मेरे जो मित्र हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं इसको एक बताना चाहता हूँ, मेरे पास तो हिली बहुत देर से आई है। अभी आप लोगों के पास समय है, आपके माँ बाप की उम्र भले छोटी हो, लेकिन माँ बाप है, बच्चे है, सभी के लिए ये हीलिंग एक लाजवाब चीज है। तो सभी के घर में हीलिंग होना चाहिए। मेरे पास अभी 3 रेजोनेंस है और एक गोल्ड साइकिल मेरे पास है, कि पूरे परिवार में किसी को लेना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका खत्म और मैं लूं। तो हम हर रोज एवरी डे फिजिकल प्रोग्राम 2-2 लेते हैं, और रेजोनेंस दूसरों के लिए रखा है और हम भी लेते हैं रेजोनेंस से, जो इसमें न्यूट्रिशन का प्रोग्राम वगैरह है। तो एकदम ये बढ़िया चीज है और सबके घर में होना चाहिए। थैंक यू, Thank you. धन्यवाद आपको मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी Thank you, Nathavai. Thank you so much for sharing your experience with us. It was really indeed exciting to hear from you. Moving ahead, now I would like to call upon our next speaker. I think she's been MSc and PhD in geology. She's a quite learned lady that we have today. We'll be inviting her. She's been expert in
beauty. She's been running her beauty clinic since last 30 years. She's been a lecturer in a regional college. It's been almost 5 months she's been using our Healy product. So please help me welcome Dr. Sarita Srivastav, and she would be helping us share her experience about our Healy products. So Dr. Sarita, the stage is all yours. Jaslin, if you can put the spotlight on Dr. Sarita and unmute her. Yeah. Sarita ji, I can see her. Can you hear us? Yeah, I can see her now. Yes. Yes, ma'am. Please. He has to be unmute. Yeah. मैम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. आप co-host हो, you can unmute. Just a second. Jaslin, I think her net is down. Maybe we can just catch up. I'm not able to find her now. I think उनका signal lost हो गया क्या? Yeah, I think so. I think let's carry on, and then once he comes back, we can. Sure. Okay. If you're waiting a minute or two for Dr. Sarita to join in, before that I have just 2 questions for all of you. जो भी हमने इस वक्त देखा है इस event में, I want you all to participate in one poll that I'll be launching now. So you can see a question on your screens. अभी आप अपने screen पे questions दिख रहा होगा. Please select as many applicable. Anybody around you, your parents, your seniors, in and around your house, if they are having any of these issues, please do select them. And you can select multiple issues. So we'll see if Dr. Sarita is joining till that time, so we can also have her in. Okay, so 45 people have already answered. I hope I'm actually expecting सब लोग अपने answers यहाँ पे डालें so that you all can also see what everybody has answered. ठीक है? So I'm just going to wait another 10 seconds. सरिता जी अनम्यूट करिए अपने. Jaslin, Sarita ji has joined us. Okay. So I'll just end this polling. 66 people have already answered. आपके screens पे you can even see that not one person has selected one but selected multiple issues. तो इतने multiple issues हैं that people are actually facing, and now we know that what we can do with these issues, how we can do our best, right, to kind of not completely cure but at least help us live in a more healthy and holistically better life. So that's from my side. I think let's call on Sarita ji on stage now. Yes. हाँ, आवाज आ रही है आपको? Yes, Sarita ji, we can hear you. आवाज आ रही है? हाँ, सुन पा रहे हैं आपको. बताइए आप. हाँ. आज पेरेंट्स डे के अवसर पर सभी पेरेंट्स को मैं हीली के माध्यम से स्वस्थ, सुरक्षित एवं खुश रहने की शुभकामनाएं देती हूँ, जो कि आज के वक्त का मूल मंत्र है. मैं करीब 30 इयर्स से ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ. मैं भोपाल में मेरा पार्लर है, और चूंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस रहा और मैं इसलिए अपने पार्लर में स्किन एंड हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा करती हूँ. हीली मेरे जीवन में एक वरदान की तरह आई, जिससे मुझे ट्रीटमेंट्स में बहुत शर्म मिला. हर ट्रीटमेंट्स में रिजल्ट्स मुझे जल्दी मिलने लगे. जिसमें मुझे 1 महीना लगता था, वो रिजल्ट्स मुझे 15-15 दिन में मिलने लगे. मैं अपने आप को बहुत
खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे एक ऐसी अनोखी डिवाइस मिली जिसके पास हर छोटे से लेके बड़े मर्ज तक का इलाज है। मुझे फरवरी एंड में इस डिवाइस के बारे में मालूम चला। मैंने गूगल के बारे में सर्च किया और बहुत अच्छे रिव्यू मुझे इसके मिले, स्पेशली जॉइंट्स पेन, बैक पेन और जितने भी तरह के पेन्स होते हैं उसके बहुत अच्छे लोगों ने रिव्यू डाल रखे थे। इसलिए मैंने सोचा कि इसको ट्राई किया जाए। मैंने इसको डेमो लिया और मुझे उससे आराम मिला। आई एम 73 ईयर ओल्ड और मुझे करीब 6-7 साल से घुटने में बहुत तकलीफ थी। 2 साल पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका कार्टिलेज बहुत डैमेज हो गया है, अब आपके पास नी रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई इलाज नहीं बचता है, तो आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, नहीं तो और डैमेज हो जाएगा। इमीडिएटली उसी के बाद लॉकडाउन लग गया कोरोना के कारण, तो ये ऑपरेशन टल गया और मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे जाने का सोचा और होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की। इसी बीच मुझे हीली के बारे में मालूम पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस डिवाइस को मैं अपने पे ही ट्राई करूं और देखूं कि कितने इफेक्टिव है। मेरे बच्चों को भी बैक पेन की प्रॉब्लम थी, वो कंप्यूटर वगैरह पे 24 घंटा बैठे रहते हैं। तो ये सोच के मैंने अपने पैरों पे डेमो करवाया और मुझे थोड़ा रिलीफ मिला और मैंने विद इन नो टाइम हीली को खरीद लिया और उस पे अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किया अपने घुटने का। और बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मुझे मिले। 3 महीने हो गए मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं अच्छे से चलती हूँ, मुझे चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। पहले मैं खड़ी होती थी तो मुझे कम से कम 5-7 मिनट लगते थे अपने आप को सेटल करने में। अब मुझे वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मैंने माइक्रो करंट्स लिए, जिसमें कि अपना जॉइंट लोकल का प्रोग्राम है पेन एंड साइकी में, जो माइक्रो करंट के थ्रू लिया मैंने। और कभी-कभी मैं अल्टरनेट चेंज करती रहती हूँ, कभी बायो 1 कभी बायो 2। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यदि हमारे जॉइंट्स पेन है तो वहाँ का सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा होना चाहिए, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जॉइंट लोकल, बायो एनर्जी 2, बायो एनर्जेटिक 1, ये सब माइक्रोकरेंट के लिए एक दिन का गैप करके और रेजोनेंस के थ्रू मैंने क्रिएटिव मेडिसिन, वाइटल सब्सटेंस की जब हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स की कमी होती है, वाइटल सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होती है, तब भी पेन होते हैं। तो वाइटल सब्सटेंस में पेन में जरूर देती हूँ और साथ न्यूट्रिशन, ये सब मैंने रेजोनेंस से लिया। और आज के जमाने में देखती हूँ कि हम लोगों की तो एज हो गई है, तो बोन्स वीक हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम और फैटी वगैरह की होती है। लेकिन आजकल तो देख रही हूँ कि यंग जनरेशन को भी बहुत आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। छोटे-छोटे बच्चे आते हैं जिनको कि घुटने में दर्द है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, चलने में तकलीफ। मुझे लगता है कि उनको अभी से अपने जॉइंट्स हीली का उपयोग करें, जिससे कि कोई नुकसान नहीं है, कोई उनको केमिकल नहीं है उसमें कि उनको ये डर लगे या कोई मेडिसिन उनको नहीं खाना है कि लोग डरते हैं मेडिसिन खाने से। तो मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि समय उपयोग करें और ऐसे ही मैंने हेयर पे भी बहुत किया है। हेयर रिग्रोथ ऑयल लगाती थी और जब मेरे पास माइक्रो करंट भी इसके साथ ग्रोथ ऑयल में लगाती थी, उसके साथ साथ मैंने माइक्रो करंट देना शुरू किया। और जब मेरा
करंट निकली दिए, फिर मैंने 2 दिन के बाद देना शुरू कर दिए और मैंने देखा कि मेरे हेयर की ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई और जो पोर्स थे वो ओपन हो गए, बाल निकलने लगे। और डॉक्टर सरिता जी, थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा आप थोड़ा जोर से बोलेंगी, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा। हाँ जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो माइक्रो करंट के थ्रू जब मैंने ऑयल लगाया हेयर रिग्रोथ का, अब आ रही है, अब ठीक आ हाँ रही है जी, आपको? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो हेयर रिग्रोथ का मैंने हेयर ऑयल अप्लाई किया, उसके बाद मैंने अपना माइक्रो करंट में ब्यूटी के उसमें हेयर का माइक्रो करंट्स लिए, हेयर का प्रोग्राम लिया मैंने, और मैंने देखा कि मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ने लगी, पोर्स ओपन होके बाल निकलने लगे। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो नए बाल आ रहे हैं वो अब ब्लैक आ रहे हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात है और बहुत अच्छा मेरे पास उसका टेस्टिमोनी है और मैंने शैलिन जी को दिया हुआ है उसका आपके पास। हाँ, ये देखिए, ये मेरे इतने बाल सब चले गए थे, उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब मेरी ये कंडीशन थी नंबर 1 वाली। जब पोर्स ओपन हुए और हेयर निकले तो नंबर 2 पे जो आपको दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि हेयर निकल रहे हैं। और नंबर 3 वाली जो पोजीशन है, ये बालों के आने के बाद की, और आप इसमें नोटिस कर सकते होंगे कि जो बाल आए हैं बीच में वो काले-काले आए हैं। बहुत सारे तो नहीं आए लेकिन काफी कुछ आ गए और मुझे उम्मीद है कि आ जाएंगे। और ये आज की सबसे कॉमन समस्या है यंग बच्चों में भी, ग्रेइंग ऑफ हेयर, फॉलिंग ऑफ हेयर एंड एलोपेशिया, जिसमें कि ये हमारी डिवाइस जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होगी और मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इस पे। और दोनों जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने पे किए तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है इससे। और लाइव आप लोगों ने भी देखा होगा और अभी भी देख रहे होंगे कि हेयर ग्रोथ में फर्क दिख रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बहुत छोटी सी डिवाइस है जिसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, उतना ही आसान इसको ऑपरेट करना है। एक छोटा सा बटन है जिसको कि हम प्रेस करते हैं, हमारी हीली ऑन हो जाती है। उसके बाद यह ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर चलती है। 1 मिनट 20 सेकेंड्स का यदि हम प्रोग्राम्स लगाते हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हमें डिजीज होने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हमें क्या हो गया, हमें डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया या क्या हुआ। इससे के कारण हम पहले से जान लेते हैं कि हमारे में क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी की, और विद इन नो सेकेंड्स इसी से हम ट्रीटमेंट दे लेते हैं, इसी से दवाई हमारी पहुंच जाती है फ्रीक्वेंसी के जरिए। और यह छोटी सी डिवाइस एक चमत्कारिक रूप से हमें हेल्दी करने में सहयोग करती है। और लास्ट में कहना चाहूंगी कि ब्रह्मा ने दुनिया की रचना की, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हीली डिवाइस की जिसके द्वारा हम सभी के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना रहे हैं। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा और सोच के साथ इस छोटी सी ऊर्जावान डिवाइस को अपने जीवन में जरूर शामिल करें और उसका चमत्कार देखें। जरूर इसको उपयोग करें, बहुत चमत्कारिक डिवाइस है। अंत में अपने फादर मदर को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, जिनके कारण आज मैं इस जगह पे हूँ, उनके संस्कारों के कारण। और 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों का प्यार कभी कम नहीं होता, उन महान लोगों को माता पिता कहते हैं। अपने माता पिता के साथ साथ मैं सभी के माता पिता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे कुछ अपने विचार रखने का मौका दिया गया। थैंक यू। Thank you so much, Sarita ji. Thank you so much. It was indeed, really overwhelming to hear from you about your, the way you got benefited out of your joint pain and the kind of hair growth you're having. Really overwhelming. Thank you so much for your experience, for sharing your experience with us. Now we are towards the last segment of our event today.
And it's a wonderful opportunity, and we have with us our head of sales for Asia Pacific, Mr. Mark Bunzayer. And I would request Mark to address all of you and give us his closing remarks for the session. Thank you. Awesome. Thank you so much, Sachin, and congratulations, Healy Team India, on a amazing training event. I mean, honestly, my breath's been taken away, my insights have been elevated, and personally, I've been moved and humbled by this amazing piece of training that you've all put together and the testimonials that have been shared today. So a massive congratulations to each of you. But hey, what an amazing day to celebrate. Today is Parents Day. And, I'm not so sure about you, but I know for me, whenever I think about my parents, I think about the memories of my childhood. Just it takes me back. And back then it wasn't about the materialistic things that were around, but it was just the smiles, the laughs, the togetherness, the family times, the celebrations, and all those joy moments that we had together that made it so special. But also, as we started growing up, when we think about our parents, we actually realized the sacrifices that they started to make to give us opportunities that we never had. And some of those sacrifices are sacrifices that just, in today's world, people just don't appreciate the level of those sacrifices because we're in an instantaneous marketplace. And what I mean by that is that people want gratification immediately. And when I think to, my journey as a kid, growing with my parents, right, as they grew, so we grew, so they, grew their assets and well-being and things like that. And we just grew through that. But, I noticed some interesting transitions during my life. And one of the transitions was, of course, yes, always having those memories, the joys, the fun, the special moments. But I remember, a switch starting to occur where my parents started becoming more of a role model for me, right? And I want you to think about that for yourself. When you really think about it, your parents are probably the most key figurehead in your entire life. And we mimic their habits. Yes, that is both the good habits and the bad habits, by the way. We pick up both, okay? But we pick them up. We mimic their behaviors, maybe it's, in some instances, maybe it's just their natural joy and zest for life. In other instances, it's the way they handle stress and challenges and things like that. But really, I found myself, and maybe you felt the same thing as well, you go through this transition and you actually go, if I could just be like mum, or if I could just be like dad, it would be massively successful. And so we really have them as these figureheads in our lives. And then we start, getting towards our late teenage years, and we start going to, maybe in some instances, university, or we go out into the big wide world. And, that there's another transition that starts occurring. And that transition starts occurring from, them being an aspirational figure for you to start being something more powerful in your contribution to the family. And, it's things that you start thinking about, and it's things like, you become this role of light for the family, where you are upholding the family name and what the family name stands for. We want to bring pride to our family. And,
you know, we just want our parents to be proud of us. And I know to this day, I mean, I'm turning 50 in 9, 10, 14 days. In 14 days, I turned 50 years old. And to this day, I still think about, you know, are my parents proud of how I bring up my kids? Are my parents proud of my contribution to society? Are my parents proud of the environment I've been able to create for my family? Are my parents proud of the contribution that I can give back to them in a great way? And, you know, as a 50-year-old man, I still think about these things. And I suppose it really encapsulates how important our parents are to us and how much love we have for them that sits in our heart. My parents live in South Africa. I live in Australia. And as hard as it is being this far apart, you know, I still feel a sense of gratitude and appreciation for everything my parents have done for me, because I would never have got this opportunity to be here if it wasn't for the opportunities and sacrifices that my parents made to enable me to be able to follow a path that allowed me to live a life here in Australia with my family. So where does that bring us to today? I want you to think about the privilege that you have to have parents like you've had. And now I want you to think about the privilege that you get to give back, because it's not just about, you know, living a great life for yourself. Because as an immigrant myself, I know how important it is to be able to give back to my family in so many different ways. And I know there are so many expat communities, even outside of India, where, you know, the siblings' burning desire is to give back and provide for their parents. This is how important our families are and our parents are to us, and how we hold our parents on this amazing pedestal. And so now, yes, you know, from the training today, what would be the most simple thing? Yes, you could give them a Healy device and it could make all these amazing impacts to their lives. But here's what I want you to think about today. And here's why today is such a privilege. Because your future sits in your hands. In fact, your family's future sits in your hands. And do you realize that through Healy, besides the amazing benefits that we have an amazing vision. And our vision is to bring humanity to the entire world, to allow people to have holistic well-being in their lives. And as an advocate of humanity, as an advocate of holistic well-being, it would be remiss of me not to say to you that, you know what, there is something here in Healy, the Healy family, that is so much bigger than us as individuals. What would it mean to you to be able to do something greater than what anyone has ever been able to do for you, your family, your parents, and everyone combined? What if you could change the trajectory of your family's circumstances forever? You see, what's going to happen in India over the next 6 months, 12 months, 24 months, 72 months, and for the foreseeable future is going to be one of the biggest shifts of momentum ever seen in holistic well-being. I know how connected our founder, Mr. Marcus Schmeeker, is to India, having been nurtured and developed in spirituality within India. And I know what a difference we can make, not just to the Indian community in India, but the entire community all around the world. With Healy, anything
is possible. I really encourage you to think about everything that you heard on the call here today. Yes, about the difference that a device can make to your family, and in particular to your parents, to give them that beauty of enjoyment of life as they go into their twilight years. But I also want you to think about you as the provider, you as the catalyst for change, and the power that you have to make an everlasting difference on the world as we know it. So with that, Sasha, I'd like to thank you for having me on the call. To all our guests and to all our parents and to all our members that were on the call here today, thank you so much for giving up your time to be on this call. I am humbled and moved by this really special moment that we've had here on this call together. So from me to you, I wish you an eternity of love, happiness, and spiritual well-being. Thank you so much for having me on the call, Sasha and Team India. Thank you so much, Mark. I think it's been inspirational hearing your words, and it gives us goosebumps. It really motivates us. And I think on this special occasion of Parents Day and Guru Purnima, on the occasion of the auspicious month of Shravan Mas, I think I would like to wish all our participants, all our Healy India members, the customers, the prospects, a great future ahead. I think we are entering into a Healy evolution now. I think we are entering into a phase wherein a lot of changes that are happening in terms of business plan, compensation, be it back office, shop, with new product launches. We are talking about exciting promotions. We have announced our Berlin qualification as well. I think a lot more to do. I think we are heading towards the explosion. It's like we are heading towards a phenomenal growth in India market. It's been just, we need to have some patience. We will soon be getting live with our shop and back office very soon. We'll soon be announcing about that, and I'm sure you are just holding on with all your orders, and I'm sure you are also continuing with your business building activities to meet up with your clients, your prospects, collecting orders. So entire activity is there going at the back end, and once we are live, I'm sure you'll all be going all gung-ho about it. So I'm sure we are looking forward to a great start, and we'll soon be announcing that. With this, I would like to close the session today, and thank you so much for joining us. Wish you a great day ahead and a great month ahead also. Thank you so much, and namaste from Team India. Thank you. Okay, see you. Bye. Thanks. Thank you so much, everybody. Take care. See you very soon. Bye bye.